हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूनम दुआ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रशियन फिलोसोफर मिखाइल मिखाइलोविच बाख्तिन का एक ऐसे एपिक एंड नॉवल। प्लीज़ डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कॉन्टैक्ट अस टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। बाख्तिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ही वॉज अ रशियन फिलोसोफर, बहुत ही अच्छे लिटरेरी क्रिटिक थे और स्कॉलर थे जिन्होंने लैंग्वेज के फील्ड में, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के फील्ड में बहुत ही काम किया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 17 नवंबर 1895 एंड डाइड 7 मार्च 1975. So he was the central figure basically of an intellectual circle of Russia, the circle that focused on the social nature of language basically. Language, literature and meaning in the years between you can say World War One and World War Two. इन दोनों wars के बीच में इन्होंने काफ़ी काम किया है. And though his major works were not widely read until after 1960s, his ideas were later adopted by many academic spheres, many academic scholars, and have contributed to a different, you can say, new direction in the field of philosophy, linguistics, and literary theories. आइए बाख्तिन के किए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जानते हैं। इन वर्क सच एज प्रॉब्लम ऑफ डॉस्टोवेस्कीज पोइटिक्स 1929 and 1963. It was originally published in 1929 in Leningrad under the title Problems of Dostoevsky's Creative Art, but it was republished with significant additions under the new title in 1963. Next work, Rebellious and His World 1965, The Dialogic Imagination 1975. Bakhtin in these works outlined theories on the social nature of language, literature and meaning with the spread of his ideas in the Western academic world, Western literature world. Bakhtin has become so one of the major figures of 20th century literary theory. अब बात करते हैं एपिक एंड नॉवल के बारे में। एपिक एंड नॉवल टूवर्ड्स मेथडोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ द नॉवल इज एन essay written by Bakhtin in 1941 that compares the novels to the epic as the name states. It was and it has been one of the major literary theories of the 20th century. Bakhtin suggests four aspects of the general characteristics of the novel. The novel should not be poetic. Novel को poetic form से अलग होना चाहिए, as the word poetic is used in the other categories of imaginative literature. तो poetic एक तरीके का imaginative literature है. Poetic does not reflect our lives. Next, the hero should not be heroic like in an epic. हीरो कुछ ऐसा स्पाइडरमैन, सुपरमैन या हमारे इलियड के अकिलेस या महाभारत के अर्जुन टाइप का नहीं होना चाहिए. हीरो शुड बी अ नॉर्मल पर्सन. Next, the hero should not be portrayed as unchanging or already completed, but instead should be shown as in state of becoming. तो हीरो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सब कुछ, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हैं, ऑल डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट. द नॉवल शुड बिकम फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. नॉवल होना चाहिए आजकल की दुनिया के लिए, वॉट द एपिक वॉज फॉर द एंशियंट वर्ल्ड. तो एपिक्स शायद एंशियंट दुनिया के लिए होते थे, लेकिन अगर नॉवेल्स बनाने चाहिए, नॉवेल्स लिखे जाने चाहिए, तो दे शुड रिफ्लेक्ट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. बाख्तिन ने अपने इस ऐसे में एपिक एंड नॉवल टूवर्ड्स अ मेथोडोलॉजी में नॉवेल्स की कैटेगरी को कंपेयर किया है बाकी लिटरेरी कैटेगरी से. सो he attempts to outline a theory of the novel and its unique properties by comparing it to other literary forms, specifically epic. Bakhtin sees the novel as capable of achieving much of what other forms cannot, including ability to engage with contemporary reality and an ability to reconceptualize the individual in a complex way that interrogates his subjectivity and offers the possibility of redefining his own image. ही सेज कि नॉवेल्स में एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि राइटर को एक अपॉर्चुनिटी देती है टू राइट इन हिज और हर ओन स्टाइल. He argues that it is a genre with unique ability to constantly adapt, constantly change, because there is no generic benchmark of the novel as there is
for epic and lyric poetry and other forms. Further he says कि epic एक बहुत ही डिस्टेंस जॉनरे है, मतलब लोगों को उनकी रियलिटी से बेसिकली दूर ले जाते हैं, हमें पास में ले जाते हैं, हमें एंशियंट वर्ल्ड में ले जाते हैं, जबकि नॉवेल्स हमें हमारी कंटेम्प्रेरी दुनिया से जोड़े रखती हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम एपिक that is its form and structure situate it in a distant past that assumes a finished quality. Epic जो है हुआ और होकर ख़त्म हो गया, and we get to know the whole story of the ancient world, meaning it cannot be re-evaluated or rethought or changed by us. According to him, novels इंसान के present की पहचान है. So novels had become conscious of the present not only as a continuation of the past but also as a heroic and you can say new beginning as well. So this feature of novel allowed that it was concerned with the possibilities of the present to flourish. The novel therefore is the only genre, only category born of this world and in total affinity with the world only. That is the most apt form of the literary expression in the modern world. So according to Bakhtin, novel सबसे ज़्यादा perfect form है अपने आप को express करने की. So as a conclusion, we can say in this essay, Bakhtin attempts to outline a theory of the novel and its unique properties, different properties, by comparing it to other literary forms, specifically to the epic. सो बाख्तिन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं. बाख्तिन कंपेयर्स द नॉवल टू क्ले, अ मटीरियल which can be remodeled, which can be reshaped, which can be formed into different kind of shapes and sizes. And on the other hand, epic is a marble which cannot be reshaped, which is concrete. In next part of the video, we will understand dialogism concept given by Bakhtin. Please do watch, share and subscribe the channel and contact us to join our online and offline classes. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams.